Hi guys. So only few days are left to give your examination, right? And we all are striving with the content, with the syllabus, with some of the topics, some of the chapters, and it becomes very crucial for us to be on the tracks. Literally, guys, in this video, I'm just going to circle around the basic, the elementary thing, which is crucial, which is the utmost aspect of your preparation. That Let me tell you something about your English paper. Your English paper, which has which is going to have three sections. Hmm? Three sections. First is writing section. Oh, sorry, comprehension. Then is writing section. Then your literature. So for the very first paper, I won't say there is much more to do. Literally, there is nothing to think much about. It is the easiest, is the one of the simplest paper that you can do. Okay, section. There are two sections which are going to give you marks already: the writing section and the comprehension. What you need to do is to just practice, practice, and practice. These two sections are purely purely practice based activities. Nobody have any kind of study material they'll be remembering. Okay, so there is nothing to be worry about. What is elementary is that on a daily basis, regularly, regularly practice these two sections, irrespective of anything. Yeah, they go. What is important that comprehension is going to be an all-rounder practice, because comprehension you will be reading, you'll be increasing your reading. Through reading, you will be increasing your speed also. So what is important is that in these two sections you will be covering the all-round strategy, okay, of writing and reading, because these two sections need two things: your writing ability and your reading and understanding. So if you will be giving input in these two sections, there will be all kind of all fold or fourfold benefit of this. So practice these two um, sections. And for literature section, I would say please refer to previous past year questions. Hmm? Get a summary of every chapter. Phases should be there, and your strategy for, I mean, you just remember, just memorize the chapters, author, as well as the name. I would suggest more focus on uh, prose section. Sorry, poetry section. That is very important, because poetry section is all about understanding, interpretation, your own evolution. What you understand is you supposed to make the other person understand. Okay, so uh, that should be done now. And yes, this is fourth. This is for 4th of February, and is very crucial. It becomes very crucial for us to
kind of be consistent in something. See, the writing section is all about some game of writing, reading, and just one thing is also there, your format memorizing. So if you will have ample amount of knowledge about the format, you will be playing like a pro. Okay, so what becomes more important is that you keep focus you keep focusing on some of the solid points. There is We don't have time to spend the common ways of revision. Revision is necessary, yaar. Revision is necessary. It is utmost. You cannot alter, you cannot uh, kind of, you don't have any option except revision. But the way you revision will make the whole difference. So I will suggest prefer your own notes as well as read past year question papers. Read their solution. Okay. Every question has one basic point through which the examiner will be evaluating the marks. So you must remember that keyword. For every chapter, from every chapter, there is a keyword. Your theme, central idea, your concept, your phases, important phases. Okay, so you must be remembering that, and you can do it. Literally, you can do it. If you are studying in class 12th and class 10th, you can do it. Yeah, this is the cup of your tea. Hmm. What I am emphasizing on is that you need to be smart in every action you take, because that is the only way to move further. Okay, so till 9, okay, till 9, just do everything, whatever you can do. Study geography, study economics, study political science, yes, study history. Okay. Mm, but remember one thing, that everything you do must have clarity in it. See, we can't afford multiple sources for studying. What should be our uh, working formula is that, yeah, I want this concept to be clear. Yeah, I want writing sections to be clear. So see, comprehension has been clear. Yeah, it is the basic thing. You need to read the question first, then you are supposed to read the passage and make a compatibility between your questions and answer. First and the foremost thing is that no matter how many questions you don't answer, you don't know. Okay, you are not supposed to answer every question in the first uh, round of reading, and you are also not supposed to do reading again and again. What is the need is that you read the question, okay, answer those questions which you know the answer of, okay, which you know the answer uh, of which you know the answer, okay. And the question that you don't find, that I'm not finding the answer, just leave that question. Mark, mark with the pencil that I'll be coming back to this question after I complete this and that.
because time is necessary. You cannot allow time, you cannot give time, yeah, more. You cannot give more than sufficient time to a particular thing, because there is much more to do. There are other things to do. And you are a smart strateger, so you must prioritize your strategy, your time, you know. Your timings must be, your timing is going to play a crucial role in throughout the paper. This is elementary. What make uh, See, you're going to win this game with three most powerful weapons. First is your timing, your writing skills, and your reading. Writing skills, it includes speed and writing. Uh, Your writings must be kind of understandable. Okay, neatness is crucial. Your way of writing, your kind of the way you have answered is very important. Does not You are not supposed to answer the questions which you are not supposed to answer in 90 words or 80 words when you are asked for simple 40 words. 40 words, 10 words, 4 lines, that's it, yeah. 3 lines. Hmm. So beware of this thing, because if you will be giving more than sufficient time, more than time required to one particular thing, one particular section, you will be stealing the time from the second, which belong to the second part. Understand this and work accordingly. Okay. And again, refer to your notes again and again. Daily do one writing section, one again. Of course, literature section also to be done, but I'm not emphasizing it on that too much, because I know you will be able to write it, because it's all about the things, the concept that you have read, the ideas, the interpretation that you have made, the theme, the central idea that you have understood through each and every poetry and prose. You must have gone through the proses so well, and that is crucial, yeah. Because every prose, I know this is not a story. Every prose is going to, every prose is having some central idea, some ethical, some moral value. You take any kind of prose like dynamic, it teaches us, it emphasizes the idea of uh, subduing the, you know, petty prejudices made by humans, like race, kind of nationality, religion. Okay, so and it teaches us to stand as a human being to help someone. Humanity is above all. Okay, and we take about the rat trap. It talk about the goodness, the innate goodness and kindness, the transformation from uh, kind of a different person, obsessed, a self kind of selfish, to a person who is kind of authentic, ethical, kind.
Okay, every teaches, everything teaches us. So you must get that idea first, and if you know that you are going to make it here. एंड अब ऑल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि इन किताबों के कुछ पन्नों, कुछ पेन के चक्कर में अपनी ऑथेंटिसिटी को नहीं खोना है। ये तो आप मान लोगे सबसे अलग क्या हटके है, ये तो आपके जीने का मकसद होना ही चाहिए कि यार एट द एंड हर चीज़ एक्सटर्नल है। इस दुनिया में हर चीज़ एक्सटर्नल है, ठीक है। आपकी मेंटल पीस को वो चीज़, उसकी हिम्मत ना हो पाए यार कि वो कुछ कर सके। मैं तो कह रहा हूँ चलो ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ कि यार हो सकता है कि इतनी सब पढ़ाई करने के बाद भी, ठीक है, ये सब करने के बाद भी हो सकता है कि यार आपकी ना चले, समझ रहे हो सकता है कि आपको कुछ भी ना आ रहा हो। चलो ठीक है यार, हो सकता है कि आपने एवरेज मार्क्स स्कोर किए, तब भी उस समय पे भी आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए ना कि यार भाई साहब यार करा तो था मैंने, नहीं हुआ नहीं हुआ, हार्ड में जाए। मैंने तो शिद्दत से मोहब्बत की थी, निभाई मैंने, अब सामने वाला दगाबाज निकल गया तो मैं क्या करूँ। तो वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि यार करके तो सब जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद आपको इतनी भी नहीं है। अब फालतू की उम्मीद नहीं कर रहे हो बदतमीजों वाली कि यार हाँ मैं करके जा रहा हूँ तो मुझे सब आ जाए, नहीं। आप क्या करके जा रहे हो और क्या आएगा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखना। आप अपना एटीट्यूड मेंटेन करके रखना, आपका एटीट्यूड आपको डिफाइन करता है। हर चीज़ रेस्पॉन्स है। देखो यार दो चीज़ें हो सकती हैं, आप जाओगे, आपने सब कुछ पढ़ा है, आपको बहुत ज़्यादा वो, आप उछल हो यार हाँ मैंने तो सब कुछ पढ़ा है, देखो क्या आ जाए। आप देखते हो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, या चलो उस टॉपिक से आए हैं जो आपने देखा ही नहीं उठा के। दो चीज़ें हैं, आपका मोरल गिर जाएगा। आप सोचोगे अरे अब क्या, ये तो कुछ और ही हो गया, सोचा था क्या और क्या हो गया। ये है आपका एटीट्यूड। और दूसरी तरफ ये है भाई, भाई ये क्या हो रहा है भाई, भाई भाई ये क्या हो रहा है, अरे भाई मेरी ट्रेन छूट रही, भाई ये क्या हो रहा है। अब ऐसे कॉमेडी में निकाल सकते हो चीज़ें, इजी इजी पीजी। भाई मैंने तो पढ़ा था। इसका मीम बन जाएगा, व्हेन यू हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल एंड व्हेन यू सी द क्वेश्चन पेपर, उसका अलग एक रोला है भाई। आपकी पर्सनैलिटी किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप मस्त हो, ऑटोनोमस होनी चाहिए कि यार हाँ मैं मस्त हूँ तो मैं मस्त हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि यार पढ़ने की उम्मीद थोड़ा सा वो था कि यार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आ जाएंगे, उसके लिए मैंने पढ़ा, ठीक है। जो भी मुझसे बन पड़ा या जितने भी मुझे नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने ये उठा उठा के चीज़ें कर ली। मगर फिर भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका एटीट्यूड ही चेक कर रहा था। उस समय वहाँ नहीं हार सकते आप। देखो वो जीत हार आपके, मतलब वो जीत हार क्या, वो मार्क्स आना ना आना ये आपके बस की बात नहीं है, वो आपके अंदर ही, वो आपके वो आप में वो काइंड ऑफ अथॉरिटी ही नहीं है आपके पास, ठीक है। वो डिसीजन मेकिंग आपको नहीं दे रखा है कि यार आपके कितने मार्क्स आएंगे। आपको अगर दे रखा होता तो 100 में से 100 डाल दो, 105 डाल दो, ठीक है। तो जो चीज़ किसी और की है उसमें टेंशन क्यों लेना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये सब करने के बाद भी आपको एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए यार इतना पढ़ा था, एक नंबर भी नहीं आया, तब भी अपने मस्त हैं मौला में, और जाके दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं कि यार देखा जाएगा जो होगा देखा। बट ऐसा कल मैंने एक चीज़ सुनी थी कि भाई बड़ी मेहनत से यूपीएससी की तैयारी करो, बड़ी मेहनत से,
ठीक है, डू एवरीथिंग, है ना, जस्ट गिव योर लीस्ट एफर्ट, आई मीन योर लीस्ट ब्रेथ, योर लास्ट ब्रेथ टू द प्रिपरेशन। उसके बाद जाते हो आप, आपकी रैंक आती है 5, आपकी रैंक आती है 1, टॉप 2, टॉप 1, टॉपर, टॉप 10 रैंक आती है आपकी। आप लाते हो, वो देखते हो, आपके आंसू आ जाते हैं, यार मैंने इसके लिए इतनी मेहनत करी, 3 4 4 साल घर से बाहर नहीं निकला, ये वो, हर चीज़ पढ़ता रहा, कुछ भी हो पढ़ता रहा, ठीक है, दोस्त नहीं मिले, गर्लफ्रेंड नहीं मिली फिर आप देखते हो आपके हाथ कांपने लगते हैं, फिर आप फाड़ देते हो क्योंकि वो सोचो यार कि क्या एटीट्यूड क्या होगा उस बंदे का जो फाड़ देगा। हर किसी की औकात क्या नहीं है भाई ऐसे ही, लेकिन उस बंदे का क्या लेवल होगा जो अगर ऐसा कर सकता है, हैं? कह रहा है चल अभी ना थोड़ा और घिसेंगे, अगले साल देखेंगे। हाँ ठीक है, मज़ा आया यूपीएससी की तैयारी में, लेकिन वो बात अभी तक आई नहीं। अब लोग बेवकूफ़ कहेंगे, क्या पता अगले साल ना निकले, और मज़ा आएगा। ऐसे ये एटीट्यूड है, तो वही आप करोगे यार, पूरा प्रिपरेशन ऐसा करोगे जैसे मतलब यार सब आपके हाथ में। पेपर के एक दिन पहले आप ये समझ जाना कि भैया अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब साइड पर लेना। मैं तो कह रहा हूँ 21 तारीख को पेपर होगा ना, 21 तारीख को एटीट्यूड में बताऊँगा आपका 21 तारीख को क्या होना चाहिए। 21 तारीख को आप एक भी कॉपी मत छूना, एक भी, कुछ मेमोराइज नहीं करना है, कुछ ये वो नहीं है। वो एटीट्यूड होना चाहिए ना आप में कि यार ठीक है हम तो नहीं कर रहे मेमोराइज। याद रखना इसका नुकसान भी हो सकता है कि यार आपने मेमोराइज नहीं किया, देखो वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये आपका एटीट्यूड से बड़ा नहीं है। ये नहीं सोचो कि यार मैंने एक दिन ये कर लिया था, नहीं किया, मर्जी थी मेरी, नहीं करूँगा, मन था। तो सबसे ऊपर अपने एटीट्यूड को रखो। और एटीट्यूड का मतलब नेगेटिव नहीं है भाई साहब, ढंग से सोचो, एटीट्यूड का वर्ड क्या है, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव, आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन, यही आपका एटीट्यूड है, ठीक है। आपका नज़रिया आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर आपका एटीट्यूड है, आप आपके एटीट्यूड हैं। तो इसलिए अपना वजूद बना के रखो। फालतू की चीज़ें, कोई भी चीज़ ऐसी वर्थ नहीं है जो आपकी ऑथेंटिसिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो अपनी ऑथेंटिसिटी बना के रखो। दिस वीडियो इज़ मैं कंक्लूड करूँगा, दिस वीडियो इज कंक्लूडेड बाय द सेइंग ऑफ मिस्टर अनुज कुमार that what is most important above all is your attitude, is your personality, and other things are secondary. Bye bye.